Hi everyone, this is Singh. I welcome you all on my channel Medico's Maharathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss mixed bag questions of ENT FMG 2017 to 2020. Okay, so आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको मिक्स्ड फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन सा है ENT, एग्जाम कौन सा है FMG और ईयर कौन सा है 2017 से 2020 तक के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं, उन्हीं का मिक्स बैग हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट हो चुके हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, so before starting this video I want to say that if you are new to my channel then do subscribe to my channel and press on notification bell icon so that you not miss any update for upcoming videos in future. Okay, and don't forget to like this video and share this video. Okay, so let's start our discussion. Question number one is mucous cells and Russell bodies are seen in which of the below? Okay, examiner given you four options. examiner ने क्या है, चार ऑप्शन दे दिए हैं और examiner पूछ रहा है कि mucous cells and Russell bodies are seen in which will be the correct answer, my dear friends. Correct answer for this question will be option number A. Rhinoscleroma is a disorder, is a ENT disorder which will show you mucous cell and cell bodies. Okay, if examiner ask you another question, what is causative agent of rhinoscleroma, then what you will say? What will be the causative agent for rhinoscleroma? My dear friends, it is caused by Klebsiella rhinoscleromatis. Okay, कौन है इसका पॉजिटिव एजेंट? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइनोस्क्लेरोमा का पॉजिटिव एजेंट कौन है? इट इज कॉज्ड बाय क्लेब्सिला राइनोस्क्लेरोमेटिस। ओके, एंड राइनोस्क्लेरोमा जो है ये किस ऑर्डर में, इसकी स्टेजेस क्या है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इफ एग्जामिनर गिव यू ए क्वेश्चन, अरेंज द स्टेजेस ऑफ राइनोस्क्लेरोमा इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, then there are four stages. First stage is stage of atrophy, then stage of granuloma formation, then stage of sclerosis fibrosis, and after that woody nose. These are four stages, okay, which are for rhinoscleroma. Okay, and if examiner can also ask you about treatment, okay, about treating this disorder. Okay, then what you will say, how you can treat, or what clinical feature generally this disorder will say. Okay, so if examiner ask you about this thing, then what you will say? It is treated by amphotericin B. Okay, अगर examiner पूछ ले drug of choice क्या है इस disorder का, तो आप बोलोगे amphotericin B is a drug of choice. Okay, and you can give laser excision plus bone electrocautery. Okay, it is a other treatment. Okay, and if we talk about clinical features, okay, then most important clinical feature is strawberry and granuloma. okay, सबसे most important clinical feature यही है। ठीक है, और एक clinical feature और है, उसका नाम क्या है? nasal obstruction. okay, so this is about our first question. Let's move to next question. What is question number 2? Tobey's Ayer test is done for which of the following? So my dear friends, it is done for which of the following? You have four options and examiner is asking you to choose one correct choice. okay, examiner ने क्या पूछा है? कोई एक करेक्ट चॉइस बताओ जिसमें क्या हम क्या यूज करेंगे? टोबेस अयर टेस्ट यूज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, correct answer for this question will be option number D, lateral sinus thrombosis. It is a disorder in which we do Tobey Ayer test for confirming, for making diagnosis of lateral sinus thrombosis. Okay, this test generally used to record CSF, cerebrospinal fluid pressure by manometer and to see the effect of manual compression of one or both jugular vein. Okay, so इससे जो compression जो होगा, ठीक है, मैनोमीटर में हम क्या देखेंगे? CSF देखेंगे। CSF का प्रेशर क्या है? ठीक है, बाय कंप्रेसिंग बोथ जगुलर वेन। ओके, एक को प्रेस करेंगे या फिर दूसरी को कंप्रेस करेंगे या फिर दोनों को कंप्रेस करेंगे और हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? CSF करेंगे। ओके,
and by compressing these veins you can see that which site is thrombosed and produce no effect. Okay, where the site which vein will be compressed, then there will be no effect, there will be no compression, and it will diagnose you to get proper diagnosis for lateral sinus thrombosis. Okay, so this question is also done. Correct choice for this question is option number D. Okay, what is our next question? Next question is a 35-year-old patient present with tinnitus, vertigo, and fullness in ear. Okay, what is likely diagnosis? Okay, so examiner is asking you that there is a patient of 35-year-old, and second thing, she is female, present with tinnitus, vertigo, and fullness in ear. What will be the likely diagnosis? So you have to choose one correct choice from below given options. Okay, so my dear friends, correct choice for this question will be option number B, Meniere's disease. Okay, Meniere's disease क्या है? पहली बात तो ये it is a disorder of inner ear. Okay, it is a disorder of inner ear where the endolymphatic system is distended with endolymph. Okay, and it is characterized by vertigo. क्या क्वेश्चन में वर्टिगो दिया गया है? यस. ओके, सो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्टिगो. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज टिनिटस. क्या टिनिटस क्वेश्चन में दिया गया है? yes, tinnitus is also clear given here. okay, fullness in ear, oral fullness, ये भी. सो तीनों कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? मेनियर्स डिजीज के हैं. सो मेनियर्स डिजीज के चार कैरेक्टरिस्टिक हैं. पहला क्या है? वर्टिगो. दूसरा क्या है? सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस. ओके, थर्ड वन क्या है? टिनिटस. फोर्थ वन क्या है? ओरल फुलनेस. ओके, ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके हैं? मेनियर्स डिजीज के. सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, so my dear friends, this question is also clear. Let's move to next question and next. So my dear friends, our question is what is causative agent for malignant otitis externa? Okay, so examiner क्या पूछ रहा है? What is causative agent for malignant otitis externa? Okay, जो malignant otitis externa है उसका causative agent क्या है? उसका नाम हमें बताना है. नीचे क्या है? चार ऑप्शंस है. ओके, यू हैव फोर ऑप्शंस एंड यू हैव टू टिक वन करेक्ट चॉइस. ओके, what will be the correct choice from given below options? So my dear friends, correct choice will be option number A, Pseudomonas. Pseudomonas, it is an organism which is generally a causative agent for malignant otitis externa, and it is a rapidly spreading infection, Pseudomonas infection, in immunocompromised patients. Okay, and you can see the patient will present with excruciating ear pain, and you can see an important feature, you will see profuse greenish black ear discharge. Okay, and you can also see it if the infection, if this malignant otitis externa infection or pseudomonas infection reaches to skull. Okay, if it reaches to skull, then what it will lead? If reaches to skull, then it will lead to an infection that will be named as skull base osteomyelitis. Okay, so examiner क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पेशेंट है, उसको क्या है? malignant otitis externa है, and this infection is spread to skull. Then what you will name that disorder? Then you will name that disorder as skull base osteomyelitis. Okay, and this disorder can lead to many multiple cranial nerve palsy, and most important nerve which is involved here in palsy, that is facial nerve. Okay, facial nerve is affected mostly. Okay, so my dear friends, this is about our this question discussion. Okay, what is our next question? Our next question is here. A lady comes to an OPD. Okay, lady comes to OPD after fall from scooty. Her vitals are normal. Okay, she is having continuous clear watery discharge from nose after 2 days. These are most likely the feature of. Okay,
So lad comes to opd, and after fall from scooty her vitals are normal. Okay, normal is missing, her vitals are normal. She is having continuous clear watery discharge from nose after 2 days. Okay, एक्सीडेंट के 2 दिन बाद उसके क्या है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है. दीज आर मोस्ट लाइकली द फीचर ऑफ, ओके, एग्जामिनर गिवन यू 4 options and you have to choose one correct choice. So my dear friends, correct choice for this question will be option number A, CNF rhinorrhea, CSF rhinorrhea. Okay, cerebrospinal fluid rhinorrhea. Okay, so it is a generally, my dear friends, it is generally the most common cause for CSF rhinorrhea. It is ट्रोमा. ओके, ट्रोमा क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है किसका, सीएसएफ राइनोरिया का. ओके, अब जनरली सीएसएफ राइनोरिया होता किससे है, पहला तो ये हो गया कि ट्रोमा हो गया या तो कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है. ट्रोमा के अंदर किसको इंक्लूड करेंगे, एक्सीडेंट को, या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है. ठीक है, तो उस केस में पेशेंट को क्या हो सकता है, सीएसएफ राइनोरिया हो सकता है. ठीक है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन है, या फिर कोई नियोप्लाज्म है, या फिर कोई कॉन्जेनाइटल लेशंस प्रेजेंट है, तो उस केसेस में क्या हो सकता है, सीएसएफ राइनोरिया है. ओके, सो सीएसएफ राइनोरिया के पॉजिटिव एजेंट्स कौन से, यहाँ पर क्या था, इस महिला का, इस फीमेल का एक्सीडेंट हुआ था किससे, स्कूटी से, और इस केस में क्या है, कोई ट्रोमा का केस होगा तो उस केस में सीएसएफ राइनोरिया हो सकता है, बिकॉज इट इज अ कोज फॉर सीएसएफ राइनोरिया. सेकंड केस का है इन्फ्लामेशन, उसके बाद क्या है, न्यूप्लाज्म, उसके बाद क्या है, कॉन्जेनाइटल लेशंस. ओके, सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So my dear friends, our question is, an infant is presented with inspiratory stridor. On laryngoscopy you are seeing omega shaped epiglottis. Okay, laryngoscopy किया तब हमको क्या दिख रहा है, on laryngoscopy you are seeing omega shaped epiglottis. Okay, and you have to tell now the most correct diagnosis for this question from below given option. Okay, so you have to choose one correct choice. So my dear friends, choose the correct choice for this question. So my dear friends, correct choice for this question will be option number A, laryngomalacia. Laryngomalacia, generally in laryngomalacia cartilages are soft, so during inspiration they fall inside and creating a stridor. Okay, so जो laryngomalacia जो कंडीशन है उसमें क्या है, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, और जो इंस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, वो स्टाइडर क्रिएट कर देते हैं, उसको क्या हम बोलेंगे, इंस्पायरेटरी स्टाइडर. ओके, एंड ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी यू विल सी ओमेगा शेप एपिग्लोटिस. ओके, लैरिंगोस जो मलेशिया है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर कह लो जो एक बिल्कुल करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो लैरिंगोमैलेक्सिया के लिए, वो क्या है, ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटिस है, और वो किस में दिखेगी अपने को, लैरिंगोस्कोपी में. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लैरिंगोमैलेशिया. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट. So our question is, a patient presented with bilateral neck swelling, temporo-parietal neuralgia and unilateral hearing loss. So three clinical features are given here. First one is bilateral neck swelling, second one is temporo-parietal neuralgia, and third one is unilateral hearing loss. Now you have to tell diagnosis based on these three things. Okay, you have to tell correct diagnosis. And what will be that correct diagnosis, my dear friends? Correct diagnosis for this question will be option number B, nasopharyngeal carcinoma. Okay, nasopharyngeal carcinoma will show you temporo-parietal neuralgia, unilateral hearing loss. Okay, all these features will be seen in nasopharyngeal carcinoma. What is another thing I want to tell you, my dear friends, this nasopharyngeal carcinoma is a favorite topic of examiner for exam FMGE. How it is favorite? Because examiner is asking this topic from 2018 regularly. 2018 में उसने पूछा कि तुम बताओ
कि मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की। 2019 में उसने पूछा कि तुम बताओ कि जो इसकी जो साइट जो होगी, मतलब ये किस साइट में हो सकता है या फिर ये किस सिंड्रोम को ये लीड कर सकता है। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर पूछ ली, साइट भी पूछ ली। ठीक है, और अब इसमें क्या पूछा है कि सारी फीचर्स दे दी है इसने और बोल रहा है कि डिसऑर्डर कौन सा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर FMG students. Okay, so you must know about nasopharyngeal carcinoma. So most important, most common clinical presentation इसकी क्या है, वो है cervical lymphadenopathy. Okay, and you can say that you will see cervical lymph node metastasis approximately 75%. Okay, and you will see Trotter's triad. Okay, Trotter's triad क्या है, you will see Trotter's triad in नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे ट्रोटर्स ट्राइड। ओके, यू विल सी साइनस ऑफ मोरगग्नी सिंड्रोम। सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है रिलेटेड किससे, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा से। ठीक है, यूनिलैटरल क्या प्रेजेंट होगा, क्वेश्चन में हम क्या दिया हुआ है, यूनिलैटरल क्या प्रेजेंट है, यूनिलैटरल हियरिंग लॉस। ओके, सो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सीरस ओटाइटिस मीडिया भी यूनिलैटरल प्रेजेंट होगा। ओके, एग्जामिनर देता है यहाँ पर क्या, यूनिलैटरल प्रेजेंस ऑफ सीरस ओटाइटिस मीडिया, देन वो भी क्या है, इसका एक फीचर है यूनिलैटरल कंडक्टिव हियर लॉस। ओके, ठीक है, इन्फेरोलैटरल क्रेनियल नर्व 5 इन्वॉल्वमेंट। ओके, ट्राइजेमिनल न्यूरलेजिया प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या है, टेम्पेरोपराइटल, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रेनियल नर्व 10 आल्सो इन्वॉल्व्ड। ओके, पैलेटल पाल्सी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। ओके, सो दीज आर क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, so my dear friends, this question is also clear. What is our next question? Gold standard investigation before functional endoscopic sinus surgery, FESS. Okay, it is functional endoscopic sinus surgery, and examiner is asking the gold standard investigation before doing this surgery. So my dear friends, gold standard for doing this for before doing this procedure is option number A, CT scan. Okay, CT scan is must before sinus surgery. Okay, so if you are thinking to go for functional endoscopic sinus surgery, then before that you have to do a procedure that is CT scan, because it is a gold standard investigation which is generally done before doing functional endoscopic sinus surgery. Okay, what is our next question? So my dear friends, our next question is most common site of obstruction by a nasal polyp of maxillary sinus. Okay, so examiner is asking here most common site of obstruction by a nasal polyp of maxillary sinus. Okay, so what will be the most common site? So my dear friends, most common site for this question, for this disorder will be option number B, middle meatus. It is a most common site of obstruction by a nasal polyp of maxillary sinus. अगर maxillary sinus में nasal polyp है तो उसकी जो most common site होगी obstruction की वो क्या होगी, middle meatus. Okay, middle meatus, maxillary sinus opens generally at middle meatus. So maxillary जो sinus है वो खुलता कहाँ है, वो ओपन कहाँ होता है, मिडल मिएटस पे। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन जो साइट होगी ऑब्स्ट्रक्शन की वो क्या होगी, मिडल मिएटस होगी। ठीक है, मिडल मिएटस इट इज ओपनिंग ऑफ 3 साइनस। ओके, फर्स्ट वन इज मैक्सिलरी साइनस, देन फ्रंटल साइनस, देन एंटीरियर एथमोइडल साइनस। ओके, सो मैक्सिलरी साइनस के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट है ऑब्स्ट्रक्शन की वो क्या है, मिडल मिएटस। फ्रंटल साइनस के लिए भी क्या होगी, अगर ऑब्स्ट्रक्शन की बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही आएगी मिडल मिएटस। अगर एंटीरियर एथमोइडल साइनस के लिए भी पूछ ले ऑब्स्ट्रक्शन साइट, देन यू विल से मिडल मिएटस, बिकॉज तीन
साइनस की ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। सो एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मिडल मिएटस पर कौन से 3 साइनस ओपन होते हैं। सो मैक्सिलरी साइनस, ओके, frontal sinus and anterior ethmoidal sinus. So my dear friends, this is about our discussion regarding mixed bag questions of ENT of FMG 2017 to 2020. Okay, these questions are picked up from most important topics because these topics are repeated. Okay, approximately if I am talking from 2017 to 2020, then every question have a topic which is repeated two times, okay, two times, then approximate three times. Okay, nasopharyngeal carcinoma, it is a topic which is repeated every year for FMG students. Okay, अगर साल में 2 बार एग्जाम है तो दोनों बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 2020 में दोनों बार नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के बारे में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you not miss any update for upcoming videos. Okay, and if you feel any doubt for this video, then you can comment in comment box. You are most welcome for commenting in comment box. Okay, so thanks to everyone, stay safe, stay healthy.